Hello everyone, welcome you all in class 12 geography. As you know, we are discussing the human settlement chapter. This is the chapter number 10 and now we are discussing the module 2 of this chapter. In this video or in this module, we will discuss about the types and patterns of human settlement in the world. Then we will discuss the rural settlement and there are different factors which affect the rural settlement of world. So let's start the topic. Types and pattern of settlements. Basically, we can classify the settlements in two parts. As you know, rural settlement and in urban settlement. But these settlements classified by their shape, pattern and types. So the major types classified by the shape basically. So on the behalf of shape, we can classify this settlement in two parts. Compact or nucleated settlement and the second one is dispersed settlement. We can divide settlement in two parts on the basis of shape. One is compact or nucleated and the second one is dispersed. So compact or nucleated, as you can see that is clear from the name. Compact settlement, those settlement which large number of houses, that's why they called as compact, and built very close to each other. You also can see in the image the houses or different settlement made very close to each other. Such settlements develop along river valley because as you know, water is a basic need for all living being. So this kind of settlement, wherever there is availability of water, river, whatever be in water forms, there is a great number of settlements. As well as on fertile area, on fertile land, because as you know, fertile area is good for agriculture, and most of the country in their ancient time they were as a agriculture country. So the maximum population settled at the river bank as well as the plain area. Communities are closely knit and share common occupation. Second kind of settlement, that is the dispersed settlement. As you can see in the images also, dispersed means the houses or the settlements away from each other, settled away from each other. यानी जो houses या settlement होंगे वो बहुत दूर दूर एक दूसरे से होंगे. There is a space apart from the houses and the settlements basically. A cultural feature such as a place of worship or a market bind the settlement together. कोई कॉमन प्लेसेस ऐसे होंगे जो डिफरेंट सेटलमेंट्स को जोड़ने का या उनको कंबाइन करने का वर्क करते हैं. यू कैन सी इन द इमेजेस ऑल्सो देयर आर टू इमेजेस ऑफ द डिस्पर्स सेटलमेंट. सो यू कैन सी देयर इज़ अ लार्ज grassland area and one or two hut you can see on particular area, or a one or two hut group you can see particular area, and after there is a vacant area and then there is a again or another settlement. So this is called as dispersed kind of settlement. If we talk about the types of settlement, so we broadly divide the settlements in two parts: rural settlement as well as urban settlement. One is rural settlement and the second one is urban settlements. So in this video we will discuss about the rural settlement first. Any kind of settlement, whether they are rural settlement or whether they are urban settlement, there are some kind of factor which affect the construction of a particular settlement. So first we discuss, here we are discussing about the rural settlements. So there are such factors which affect the rural settlements. Rural settlements are most closely and directly related to land because as you know, in rural area the main occupation is the agriculture. They are dominated by primary activities such as agriculture, animal husbandry, fishing, mining and all these. The settlement size is relatively small. So the first factor which affect the formation of rural houses or rural settlement, that is the water supply. As you know, water is a basic need or a primary need of every household as well as every living being.
So the settlements, basically rural settlements, usually settled near the water points. The water points may be the river, maybe the any tank or any natural pond, whatever be the availability of the river area, whatever be the availability of the water area, the settlement exists there. It may be river, lake, spring, wherever there is availability of water, there is a existence of different settlements. Sometimes need for water divides people to settle in otherwise disadvantaged sites such as islands surrounded by swamp or low-lying river banks. Even as you know, low-lying river bank यानी जहाँ tides बहुत ज़्यादा आते हैं या lower area है, वहाँ दूसरे डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी लोग सेटल होते हैं. क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एंड वाटर इज़ अ बेसिक एंड प्राइमरी नीड ऑफ एवरी लिविंग बीइंग. Most water-based, like wet point settlement, have many advantages such as water for the plants, drinking, clothing, washing. River and lakes can be used to irrigate farmlands. Water bodies also have fish which can be caught for diet and navigable rivers, and lake can be used for the transportation. As you can see in the image, the Venice city. The Venice city is famous for the transportation by river. You can see in the image also, this is the image of the Venice city. तो यहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है वो सब रिवर्स के थ्रू है. आप देख सकते हैं रिवर के दोनों बैंक्स पे है जितने सारे सेटलमेंट्स हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ रिवर्स बहुत ज़्यादा मैक्सिममली यूज़ होती हैं. एज यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो, so the different household settled near or over the bank of the rivers or near the ponds because they fulfill the great demand of the living being, like drinking water, water for household demands, water for farm. So many demands or so many needs completed by the water. So the maximum house settled near over the water points. Next factor, that is the land. So people choose to settle near fertile land suitable for the agriculture. As you know, not only India but in the from ancient time, world's maximum country were in the form of agriculture era. यानी जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो सब एग्रीकल्चर फॉर्म में थी. सो एग्रीकल्चर के लिए वी रिक्वायर अ फर्टाइल लैंड, हमें एक फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती है, एंड फर्टाइल लैंड इट्स सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर. इन यूरोप विलेज ग्रू अप नियर रोलिंग कंट्री अवॉइडिंग स्वाम्प, लो लाइंग लैंड, वाइल पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया choose to live near low-lying river valley and coastal plains suitable for the wet rice cultivation. यानी जितने भी एरिया हैं, चाहे अब यूरोप के एरिया हैं, बिकॉज आपको पता है यूरोप एक आइलैंडिक फॉर्म में है, और चाहे ईस्ट एशियन कंट्रीज है. ईस्ट एशिया में बेसिकली कौन आएगा आपका? चाइना, फिलिपिन, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सारी आइलैंडिक कंट्रीज़ हैं. ये सब भी क्या है? कोस्टल एरियाज़ में है बेसिकली. लेकिन यहाँ पर भी कोस्टल एरियाज़ में लोग क्यों सेटल्ड हैं? बिकॉज दे रिक्वायर्ड और कंप्लीट द नीड ऑफ अदर थिंग्स, लाइक वेट राइस है. अब वेट राइस के लिए आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए और फर्टाइल लैंड चाहिए. तो वो कहाँ मिलेगा आपको? कोस्टल एरिया में. सो लैंड आपका ऐसा हो जो कैसा हो? फर्टाइल हो, और वो आपकी नीड्स को, बेसिकली एग्रीकल्चर नीड्स को, आपकी फूड नीड्स को कंप्लीट करता हो. नेक्स्ट, upland. Upland which is not prone to flooding was chosen to prevent damage to house and loss of life. Suppose those area which are not fertile, so people are not used to settle their houses near the low lying area. अगर लैंड फर्टाइल नहीं है, अगर लैंड फर्टाइल है तो लोग लो लाइंग एरिया में भी रहना चाहेंगे. लेकिन अगर लैंड फर्टाइल नहीं है या वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ड्यू टू द प्रॉन एरिया फॉर द फ्लडिंग, यानी फ्लड का प्रॉन एरिया होने की वजह से लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे, उससे अपर एरिया में लोग रहना पसंद करेंगे. एंड दे सेटल देयर हाउसेज नियर द अप एरिया और द अपलैंड एरिया. सो लो लाइंग रिवर बेसिन पीपल चूज टू सेटल ऑन टेरेसेस एंड लीव्स विच आर ड्राई पॉइंट्स. बेसिकली ड्राई पॉइंट्स मीन्स जहाँ पर वाटर अप्रोच नहीं करे, या तो उनकी अगर सर्टिनिटी है, उनकी डिमांड है अगर वाटर की, सो उन एरियाज़ में भी वो वाटर नीड के अलावा अपने जो हाउसेज या सेटलमेंट्स बनाएंगे वो थोड़े से टेरेसेस फॉर्म करके बनाएंगे. नेक्स्ट, दैट इज़ द बिल्डिंग मटेरियल. ऑब्वियसली दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. जिस जगह पर जिस टाइप का बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल होगा
ऑब्वियसली वहाँ का सेटलमेंट भी उसी टाइप का होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडिया एंड नर्दर्न प्लेन एरिया, सो वहाँ पर हमें सॉइल मिलता है ईजिली और स्टोन मिलता है, पैबल मिलता है, तो कंक्रीट सेटलमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा. लेकिन अगर आप किसी फॉरेस्ट एरिया में, लाइक आप असम में चले जाइए, मेघालय मिजोरम साइड चले जाइए, सो वहाँ के मैक्सिमम जो हाउसेज होंगे वो वुड के बने होंगे, क्योंकि वो फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया में आता है और वहाँ वुड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर मैक्सिमम जो हाउसेज होंगे या सेटलमेंट्स होंगे वो वुड के बने होंगे. सो द बिल्डिंग मटेरियल ऑल्सो इफेक्ट द टाइप ऑफ सेटलमेंट्स और द फॉर्मेशन ऑफ हाउसेज. Availability of building material like wood, stone near the settlements is another advantage. Early villagers were built in forest clearing where wood was plentiful. आपने स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन का नाम सुना होगा. सो स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन बेसिकली कहाँ पर होता है? फॉरेस्ट एरिया में. तो जिन ट्रीज़ को एग्रीकल्चर करने के लिए कट किया जाता है, उन्हीं ट्रीज से फिर हट्स या उनको बैम्बू की तरह यूज़ करके वहाँ पर हट्स फॉर्म की जाती हैं, और फॉरेस्ट एरिया में ही जो वुड की हेल्प से हैं जो सेटलमेंट फॉर्म किए जाते हैं. इन लाओस एरिया ऑफ चाइना, केव ड्वेलिंग वर इम्पॉर्टेंट फॉर अफ्रीकन सवाना. Building material were mud bricks and the Eskimo in the polar region use ice blocks to construct igloos. So basically ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो हाउस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है. लाइक हम एस्किमोस की बात करें तो वहाँ बिल्डिंग मटेरियल के लिए उनके पास सिर्फ आइस ही अवेलेबल है. सो वो आइस से ही मकान बनाएंगे, आइस से ही हाउसेज बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? इग्लूज बोलते हैं. अफ्रीकन के सवाना है वह ग्रेट फॉरेस्ट एरिया है. सो वहाँ पर मड और या मड ब्रिक्स को ही वो यूज़ करते हैं, क्योंकि बाकी अवेलेबिलिटी वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो यानी जिस जगह पर जैसा बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल होगा सेटलमेंट का काइंड भी वैसा ही होगा. नेक्स्ट, डिफेंस. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, hostility of neighboring group villages were built on defensive hills or island. You can see in the image the defense. यानी previous time पे अपने एरिया को या अपनी कंट्री को, अपने डिस्ट्रिक्ट को बचाने के लिए वॉरियर्स से या डिफरेंट एरिया से, जो वॉर एरिया फिर जो इन्वेडर्स होते थे उनसे बचाने के लिए बेसिकली जो हाउसेस या जितने भी जो हिल्स पे हाउसेस को फॉर्म किया जाता था, हिल टॉप्स पे. सो दिस इज ऑल्सो ए डिफेंस मेजर फ्रॉम द डिफरेंट एनिमीज. नेक्स्ट, प्लान्ड सेटलमेंट. प्लान्ड सेटलमेंट, एज यू नो, there are two kind of settlements, planned settlements और unplanned settlements. So previous time के जितने भी settlements हैं they were unplanned, बिकॉज जहाँ भी जगह मिली, लाइक रिवर अवेलेबिलिटी जहाँ पर है, वाटर अवेलेबिलिटी जहाँ पर है, फर्टाइल लैंड अवेलेबिलिटी जहाँ पर है, वहीं पर हाउसेज फॉर्म कर लिए गए. बट देयर इज़ अनदर काइंड, दैट इज़ अ प्लान्ड सेटलमेंट्स, जो आजकल के टाइम की डिमांड है और बेसिकली ये हमें अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है. इसमें गवर्नमेंट बेसिकली एक प्लान फॉर्म करती है, एक स्ट्रेटजी प्लान करती है, एक लेआउट बनाती है जिसके अकॉर्डिंग आपके सारे पार्किंग एरिया, हाउस, गार्डनिंग, सब कुछ एवरीथिंग given in that plan that they called as planned settlements. So site that are not spontaneously chosen by the villagers, यानी ऐसी साइट जो विलेजर्स सिर्फ देखते ही इसको चूज नहीं कर लेते, दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्लान अ स्ट्रेटजी फॉर बिल्डिंग द हाउसेज और सेटलमेंट्स. Planned settlements are constructed by government by providing shelter, water and other infrastructure on the acquired land. Like आप urban areas में we will discuss in detail this thing, but in brief, फॉर एग्जाम्पल जहाँ भी आप जिन कॉलोनीज़ में, बिकॉज मैक्सिमम वी ऑल आर लिविंग इन अर्बन एरियाज़, सो जिन भी एरियाज़ में हम रहते हैं वहाँ ना कोई वाटर पॉइंट है, ना कोई वाटर सप्लाई है, लेकिन फिर भी ये सब टाउन प्लानिंग की गई है, यानी प्लान फॉर्म में बनाया गया है. तो हमारे घर तक ही हमको सारी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं वो हमको कंप्लीट होती हैं. वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, रोड फैसिलिटी, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमको मिलती हैं क्योंकि ये सब किस फॉर्म में बनाया है? प्लान फॉर्म में बनाया है. ऐसे ही अर्बन एरियाज़ में होते हैं जहाँ प्लान फॉर्म में सारी चीज़ें की जाती हैं. द स्कीम ऑफ villageization in Utopia and the canal colonies in Indira Gandhi Canal Command area in India are some good examples of the planned settlements. As you know, Indira Gandhi Canal project of Rajasthan. So there is a planned project because as you know western Rajasthan का जो पूरा एरिया था, जैसलमेर, जोधपुर वाला जो बाड़मेर वाला पूरा एरिया है, that was a arid zone. पूरा एरिड जोन है, डेजर्टिक रीजन है, लेकिन वहाँ पर भी प्लानिंग करके रिवर से फॉर्म करके कैनाल लाई गई और कैनाल के थ्रू अब वो ग्रीनिश एरिया हो गया, वहाँ कल्टीवेशन पॉसिबल हो गया, एग्रीकल्चर पॉसिबल हो गया और इसलिए वहाँ पर अब सेटलमेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं.
In next module, we will discuss the basic type and the advantage of rural settlement. Thank you.